इसमें I mean I also uploaded, I mean if you know that. तो इसमें जो है वो 3 credit hours, the 3 credit hour, ठीक है, 2 क्लासेस हफ्ते में, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है डेफिनेटली, आई मीन at the different levels, and में जो लर्निंग आउटकम वो है, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअली ये चीज़ें यू मस्ट हैव लर्न in your like BS or something like this. Maxwell equations हो गई, electromagnetic waves हो गई, और अच्छा, इसमें जो what you can see the grading है, breakup. Thing is that 3 homework, 2 homework, I mean it depends, 3 or 4, और इसमें एक मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज सिमुलेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट, और मिड टर्म है एक, और एक फाइनल एग्जाम है, ठीक है. द थिंग इज दैट आई मीन I may change these weightages if I feel to change. लेकिन एट द मोमेंट जो है वो यही है कि 20% आपका जो होमवर्क है, और 30% मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, एंड जो मिड टर्म है वो आपका 20% है, और फाइनल एग्जाम जो है वो आपके 30%, ठीक है. एंड एज आई मेंशन दैट ये परसेंटेज जो है, ये वेटेज जो है, इट डिपेंड्स, आई मीन इफ आई सी द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आई कैन चेंज, ठीक है. एक्सक्यूज मी और सर, यस, सर जो या प्रोजेक्ट की बात करें सिमुलेशन, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह रिक्वायर्ड होगा, मतलब अगर वो नहीं आपको आता जब वो आपको मैं सारा बताऊंगा, जब मैं प्रोजेक्ट दूंगा उसको, तो आपको सारा बताऊंगा. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. और इसमें ये जो प्रोजेक्ट है, ये यूजुअली जो ईडी का जो कोर कोर्स है, जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता रहा, आई डोंट थिंक उन्होंने वो प्रोजेक्ट बेस्ड पे बनाया था कोर्स आउटलाइन, बट आई एडेड दिस वन. अच्छा, उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली इनफैक्ट ये भी होगा इस कोर्स का, तो आई विल लेट यू नो डेफिनेटली हु विल बी, या आपको ऑलरेडी शायद इल्म हो, मुदस्सर में भी. इसमें जो लेक्चर है, आई मीन इट्स नॉट लाइक it has to be the same sequence which I mentioned here. It's just a tentative. तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाती है, और उसमें we'll see, we may review some electrostatics, और जो कि ऑलरेडी आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फाइबर. बेसिक जो फोकस होगा इस पे वो होगा मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है, you are studying these kind of things, I mean, since you started your physics, और बहुत सारे आपको कंसेप्ट ऑलरेडी में क्लियर भी होंगे, कुछ कंफ्यूजन भी होगी. और anyway, in this course, जो मेरी कोर्स
सर अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। किसी को भी नहीं आ रही। सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हैं शायद। टेक्स्ट कर दो सर को, टेक्स्ट कर रहे हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. Just a minute, just a minute. Okay. Hear me now? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. आ रही है. Okay, okay. Okay. So, what do you see on the share screen now? Software MS Teams का interface. Sir, it's a window showing the names of participants. Okay. Just a minute. Now you can see this whiteboard. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thing is that I assume, as I mentioned, that कि आपको कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए, which I'm not going to explain here. उसमें कि like something like vector addition. I assume that people know already all these things. उसमें vector multiplication, I'm just writing, I mean it's to just you people to कि आपको इन चीज़ों का आइडिया जो है वो होगा, होना भी चाहिए. उसके बाद है स्केलर, प्रोडक्ट और वेक्टर, प्रोडक्ट और आई अस्यूम दैट कि आपको ग्रेडियंट का भी आइडिया होगा. And divergence, okay, so these kind of things. And one more thing, that is
curl, and like curl of A is equal to something like okay. So these are the things which क्योंकि यहाँ पे यूज होंगी, आई अस्यूम दैट कि आपको इनका ऑलरेडी जो है वो आइडिया होगा। उसके अलावा गॉसेस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच आई अस्यूम दैट कि आपको वेक्टर कैलकुलस अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है डेफिनेटली वो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। So we have to use in these kind of vector calculus matters. और तो बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है that basically it's a study of, or you can say deals the forces on the charges। ठीक है, तो electromagnetism, that is basically study of forces on charges, that can be positive charge or that can be a negative charge। Then this is, I mean, very basic when we start learning the electricity and magnetism। So if we further divided this electromagnetism, it will be like एक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाती हैं, ठीक है। So that basically we study charges in rest। Okay, and उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि स्टडी द चार्जेस इन मोशन। ओके, तो electrostatics, so electromagnetism we call it in general, or electricity and magnetism। ठीक है, तो basically what we do in this kind of course of study, we basically dealing with the forces on the charges, और ये जो charges हैं that can be positive or negative, it depends। Then we can further divide this electricity and magnetism, that is electrostatics, कि जब हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तब हम चार्जेस को मोशन जब वो मूव कर रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड
the thing which you people already know कि एक electromagnetic spectrum होता है, ठीक है, which covers certain frequencies, wavelengths, okay, और we know that कि उसमें बहुत सारी जो region है we cannot see with the naked eyes, ठीक है, लेकिन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम, like now electromagnetic spectrum अगर आप लें, so what you have here, let's suppose we take it 400 to 700 nanometers, ठीक है, that usually called visible region, ठीक है, light is also electromagnetic, and here we are starting from UV all the way to IR, ठीक है, and that is it's a visible region, ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है काफी बड़ा है, in the sense it covers, like if you can go below this one and beyond this one, ठीक है. So if you go below, these are actually the wavelengths, Excuse ठीक me, है. sir. Yeah. हेलो सर. जी जी. सर यहाँ एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. आप काइंडली उनके रिस्पेक्ट उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें प्लीज. Okay, okay, fine. Okay. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर. Okay, so what I was trying to explain here, okay, let me write again. Electromagnetic spectrum, ठीक है. Let's suppose I divide this small portion which we call the visible region, ठीक है. तो if we write in the form of wavelength, then it will be like from 400 to 700 nanometer, ठीक है. This is basically visible region. तो visible region में
आपके सारे जो हैं वो excuse me. Yeah, colors, like you started from the UV up to red, ठीक है, and UV जो है वो आपका ultraviolet and red, or you can say it's IR, infrared, ठीक है, और these are the colors we can see with the naked eye, and if you go below UV, you can say it's microwave. Okay, so IR continue here, and it's a longer wavelength. And this on this side we have shorter wavelength. ठीक है. This portion we are able to see, and it's in the visible region. It's a light भी electromagnetic, ठीक है. और this one I'm mentioning here in the wavelength, तो आपको ये पता ही होगा कि जो frequency होती है that is directly proportional, sorry, inversely proportional to wavelength, ठीक है. Or you can write like frequency over wavelength, ठीक है. The spectrum I'm showing in like in the form of wavelength, ठीक है. It can be converted to the frequency. So here on this side we have shorter wavelength, and on this side we have longer wavelength. Frequency. What is frequency here? Anybody can tell me what is frequency? Anybody can tell me Sir, what is, number of cycles per second. yeah, number of cycles per second, ठीक है. Okay, so it means that the number of waves passing through in 1 second, the number of waves passing through in a 1 second, ठीक है. तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. And wavelength, what is wavelength actually? Distance between two phase. Yeah, I mean, if you like, let's suppose this one is wave, okay. The shortest distance between 2 points is called wavelength. Okay. Crust and top. Yeah. So distance between the two consecutive events, or trough, you can say, I mean, it's wavelength. These are the basic things I'm just trying to review. Or ये माइक अपना जो है ये sometime I hear the noise. Can you please close the mic? म्यूट कर लें इसको जरा. ठीक है.
Okay, so electromagnetic spectrum or electromagnetic spectrum में what I mentioned, that the visible region, which is starting from 400 nanometer to 700 nanometer UV2, not exactly UV, actually you can say blue to red. So if we move further, like on this side, red side is a longer wavelength, and the blue side is a shorter wavelength. Okay. If we move below blue color, like UV, microwave, etc., etc., and then the wavelength becomes shorter. और अगर हम रेड की तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ जो है दैट वुड बी लॉन्गर. ठीक है. और why it's necessary to know the electromagnetic spectrum? क्योंकि electricity and magnetism deals with the spectrum. ठीक है. और that is why it's necessary to know about this spectrum. अब what we study, that electricity magnetism जो है, that is divided into electrostatics और electrodynamics. ठीक है. Electrostatics study charges in rest, and excuse me, and जो आपकी electrodynamics है, we study charges in motion. ठीक है. Now there are some further divisions. Like we call classical electrodynamics. ठीक है. What we study in this classical electrodynamics, basically you can say it's macroscopic study. ठीक है. Like we have in these days that we called quantum electrodynamics. ठीक है. In this one we study small objects, microscopic. ठीक है. And in case of classical electrodynamics, we study the big size bodies, okay, and like positive, negative charges in the normal, and it's moving with the low speed. ठीक है. And as compared to the speed of light. But in quantum electrodynamics,
small objects, but still it's moving as compared to speed of light uh, much lower. उसके बाद एक और ब्रांच आ जाती है, that is relativistic electrodynamics. So what we study in this kind of electrodynamics, the particles or the bodies, whatever it is, or the charges, moving with the speed of light. ठीक है? So that is why it's called relativistic electrodynamics. You must have studied the rest theory of relativity. That is why it's called relative speeds. After that, एक और branch जो है इसकी, that we call relativistic quantum dynamics. ठीक है? Relativistic quantum electrodynamics. So it means the particles or the objects, small particles or the very small size actually, microscopic, they are moving with the speed of light. ठीक है? So classical electrodynamics, Jackson, the book of Jackson, the famous and well-known book. This course actually is based on this classical electrodynamics. उसके बाद quantum electrodynamics, which we may not touch, जिसमें कि हम माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल को स्टडी करते हैं. ठीक है? Then you have a relativistic electrodynamics or relativistic. जब भी word relativistic आता है, it means there is something related to the speed of light. ठीक है? And after that you have relativistic quantum electrodynamics. So relativistic quantum electrodynamics, as its name shows, के microparticles moving with the speed of light. ठीक है? Now in electricity and magnetism, we study electrostatics, electrodynamics, magnetostatics also comes. And further division of electrodynamics, like say classical electrodynamics, quantum electrodynamics, relativistic dynamics, or relativistic quantum electrodynamics. These are few of the branches. I mean,
the divided in the way, I mean, how we deal the charged particles and what size of charged particle we deal with. जब longer the wavelength जब आपकी लंबी होगी, shorter the frequency, ठीक है? और जब आपकी wavelength जो है वो छोटी होगी, then frequency will be longer, ठीक है? What are the major application? Why do we need to study electrodynamics? इसको हम apply कहाँ कर सकते हैं? That's very important question. ठीक है? Do you know about the optical fiber? Optical Yes, fiber का sir. पता? So what is Yes, optical sir. Yes, fiber? sir. What is optical fiber? Sir, it's like bundle of wires to transmit data or fibers. So इसके अंदर क्या travel करता है? Fiber. Light on the basis Sir, of Light. total internal reflection. Mhm. Okay, so fiber optics basically is a waveguide, ठीक है? और let's suppose this is your fiber optics, okay? I'm not going to detail, I mean, how light travels in it. यहाँ पे just I want to tell you कि fiber optics में जो है आपकी light travel करती है, and light is also having electromagnetic properties, you know that. और इस fiber optics को basically it's waveguide, ठीक है? Whenever you study the waveguide, we need to understand Maxwell's equations. That is one of the major part of the electricity and magnetism, electrodynamics, whatever you call, ठीक है? अब फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है? इस कैरी द इंफॉर्मेशन, लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है ये लाइट के थ्रू कैरी की जा रही है, ठीक है? सो फॉर दिस काइंड ऑफ वेव गाइड you have like 400, if you see the visible region, I mean like 700 nanometer. आप में से किसी ने ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है पहले? ऑप्टिक्स या waves and oscillation and this kind of things? Yes, sir. किस लेवल की ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है? waves and oscillation, any of these? सर ये बेसिक लेवल की पढ़ी है, बैचलर लेवल। बीएस में आपने पढ़ी हुई है? सर मैंने तो पढ़ी हुई है, बाकी मत। Okay, anyway. Okay, thing is that waveguide
saying fiber optics. ठीक है, fiber optics is a waveguide. Different kind of waveguides are exist. और उसमें अब waveguide जो है fiber optics, it's basically इसे हम optical waveguide भी कहते हैं. ठीक है, so optical waveguide, it means it carries the optical frequencies. अब इसमें क्या है, विजिबल रीजन आ जाती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी विजिबल रीजन. यूवी कैन आल्सो बी, आईआर कैन आल्सो बी. वी कैन नॉट सी आईआर. तो अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है टीवी का, यू कैन सी कि ये जो रिमोट कंट्रोल है जो वेवलेंथ से कम्युनिकेट करता है, दैट इज आईआर. ठीक है, सो लाइट ट्रेवल्स through fiber optics, and that can be a blue light, that can be a red light, that can be a yellow, that can be a green. Okay, it depends कि किस किस्म की मॉड्यूलेशन हमने करवानी है, क्या सिग्नल लेके जाना है, whatever it is. ठीक है, so whenever we study this kind of like fiber optics, we need to understand the Maxwell equations. ठीक है, और probably at the end थोड़ा सा इसको हम देखेंगे. Microwave signal also need kind of waveguides. ठीक है, these waveguides are like hollow, you can say it's hollow kind of rod, or it depends. I mean, it can be a square, it can be a round shape, or is ये with a certain, it's made with a certain material. ये aluminium के भी हो सकते हैं, and some other materials. तो ये आपकी जो waveguide है, अब how the signal is traveling through the waveguide. ठीक है, तो जब waveguide के थ्रू कोई सिग्नल भी ट्रेवल करेगा, ठीक है, like from here, optical waveguide हो, microwave का waveguide हो, whatever it is, then we need to understand them. To explain this thing we use, and we need to understand the Maxwell equations. और you must have seen कि एंटीना जो होता है, if you have seen the antenna, if you have seen the dish antenna, you can easily observe कि उसके सेंटर में, if you see the dish antenna, उसके सेंटर में एक छोटा सा वेव गाइड होता है. So something like here, if you have, यहाँ पे से LNB कहते हैं. ठीक है, that is simply waveguide. What kind of signal you are taking from the satellite? It's a microwave region. ठीक है, how these things work, that is another story. But theoretically, if we want to understand how signal travel through the waveguide, any kind of waveguide, we need to understand the Maxwell equations. So Maxwell equation is a part of electricity and magnetism, a very important part. और that is why physical significance जो है Maxwell equations की, वो बहुत जरूरी to understand. और we'll definitely इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. We will try to understand these things कि ये Maxwell equations, how to deal with it.
Now, if you already know कि I don't know how many people try to understand electrodynamics in a way that how it can be applied, or how it can be possible to understand the things around using this electrodynamics theories. ठीक है? So one of the example which I mentioned here, that is waveguide. जब भी कोई light travel करेगी, free space में भी कर रही है, और through any waveguide, उसको understand करने के लिए, like you can, I mean, like you know that the television signal, TV signal, and radio signal, wireless signal, any kind of signals, basically it's a propagation of waves. और जब भी हम propagation of waves को study करते हैं, we need to know the Maxwell equations. Excuse me. How light travels, how waves travel, how it is detected, how it can be detected, how it can be interacted, how it can be transmitted. ठीक है? All these things, these are the practical examples of electrodynamics. और रेडियो आप सुनते हैं, FM रेडियो, उसमें AM भी आ जाता है, ठीक है? टेलीविजन आप देखते हैं, उसमें VHS, UHF, all these things, if we need to understand, then we need to study electrodynamics. Unfortunately, जो electrodynamics पढ़ाई जाती है यहाँ पे, वो it's a pretty boring way, कि उसमें सिर्फ इक्वेशनें सॉल्व की जाती हैं, और उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इस पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता. इसलिए इसको जो है वो एक थ्योरी की ब्रांच जो है ना बना दिया गया है. बट एनीवे, we'll see how we can apply these kind of things. लेकिन जो आज का जो बेसिकली जो लेक्चर है, what we have studied, not much, little slowly will go. और कि हमने एक तो स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा देखा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है. देन वी looked a bit about the branches of the electrodynamics, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने I tried to explain. Sometimes physical classes are more interactive in some ways. Excuse me. But anyway, कि कहाँ ये जो है apply होती है, और if we want to understand certain phenomena, then we have to apply these Maxwell equations. We have to understand these Maxwell equations. जैसे waveguide हो गया, antenna हो गया, how light propagate, कैसे propagate करती है light, और कैसे propagate करती हैं other waves, radio waves, television waves, satellite waves, even के in some cases in thermal imaging, the heat waves as well. ठीक है? तो इसीलिए हर्ट्स ने जो मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करते हुए ये द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन दिया था. उसके बाद मार्कोनी ने जो प्रैक्टिकली
रेडियो बनाया था उन्हीं बेसिस पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट इन अ मोर सिस्टमेटिक वे, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जो आप पहले ही पढ़ चुके हुए हैं। एंड उसमें बेसिकली तो कूलम्ब्स लॉ आता है, charges and coordinate systems, these kind of things. And ये जो वेक्टर कैलकुलस का मैंने शुरू में जिक्र किया ना, इसको रिव्यू कर लीजिएगा इफ यू हैव अ टाइम, यू शुड स्पेयर सम टाइम एक्चुअली, कि ये जो आपका वेक्टर कैलकुलस है इसकी जरूरत पड़ती है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, ग्रेडियंट क्या है, what are scalar products, or you must have known all these things before, but just to review, ठीक है। और अगर आपका कोई क्लास फेलो जिसने ये एनरोल किया है कोर्स एंड स्टिल ही इज नॉट अटेंडिंग इट, या उसको नहीं पता कि ये ऑनलाइन हो रही है, तो प्लीज़ उसको ये कन्वे कर दें कि ये ऑनलाइन जो है ये क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इफ समथिंग नेसेसरी, या कोई ई बुक्स या समथिंग लाइक, आई विल अपलोड टू LMS, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल जिसे मैं यूज़ करूँगा या वट एवर इट इज़, तो उसको मैं LMS पे जो है वो अपलोड करूँगा। दूसरा ये कि टाइम की थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे हो जाती है, क्योंकि वो टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान का और जहाँ पे मैं हूँ, सो दैट इज़ वाई वो जो लास्ट टाइम मैसेज गया है और जो जो मीटिंग का टाइम था वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग था, मैंने यहाँ के मुताबिक कर दिया था। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेक्स्ट टाइम आई विल जो आपको लिंक भेजूंगा वो प्रोबब्ली पाकिस्तान टाइम के। लेकिन ये एक चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डू नॉट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ मीटिंग, जस्ट वेट फॉर मी, ओके। मैं इनवाइट कर सकता हूँ मैं मीटिंग शुरू करने के बाद, आई मे इनवाइट द स्टूडेंट्स, okay, so they know that okay now I'm online or something like this. So do not start the meeting because इस तरह वो डेविएट कर जाती हैं चीज़ें, कुछ स्टूडेंट उधर चले जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, something like this, ठीक है। So if you have any question regarding what I have taught today, थोड़ा सा जो briefly मैंने बताया, so you can ask if you have any question. सर ये फिजिकल क्लासेस कब होनी है? ये मैंने पिछली दफा भी आपको बता दिया था, पता नहीं आप थे या क्या थे। जब मैं वापस आऊंगा तो फिजिकल शुरू हो जाएगी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों का कोई CR वगैरह बना है? नो सर। कोई CR नहीं है आपका? So I think you people should make a kind of CR जो आपको रिप्रेजेंट कर सके कहीं। Will it be official और क्या क्या इसका सिलसिला होता है? Or you people are supposed to decide by yourself? सर इस बारे में मैं खुद नहीं पता। अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है एक CR आप लोगों का होना चाहिए, इसके साथ जो मतलब आपको रिप्रेजेंट कर सके और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो
total, I mean, students in this class, what I found actually, it's 15. ठीक है, और ये किसी ने एक नई मीटिंग शुरू की हुई है. हु इज दैट गाय? ये आसिफ रजा खान कौन है? ये है इस क्लास में इस वक्त? आसिफ रजा खान. Do you know this person? यस सर, मेरे ख्याल ये से सीनियर है। जी सर, जिनके बारे में आपको कहा था कि इन्हें ऐड कर लें मीटिंग में, ये वही हैं। तो ये अपनी मीटिंग चला के बैठे हुए हैं कहीं ज्वाइन करके. तो शायद टीम्स ये पहली बार यूज कर रहे हैं क्या, तो उनको थोड़ा समझने में मसला हो रहा है। पहले भी वो ज्वाइन नहीं कर सक रहे थे, तो इस वजह से कोई मसला आ रहा है शायद। अच्छा, बट एनीवे, आई मीन इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. तो अगर आप इनसे मिलते हैं, जो जो आपके क्लास फेलोज हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि जब भी आए इसमें, तो डोंट स्टार्ट द मीटिंग, वेट, जस्ट वेट. ठीक है, वो मैं ही मीटिंग शुरू करूंगा. कोई सेटिंग भी ऐसी होती है, मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन बहरहाल नोबडी शुड स्टार्ट मीटिंग. वो इसी तरह फिर होता है जैसे ये जो है, ये अकेला ही है प्रॉब्लम. अब उसने क्लोज कर दी है शायद. या ठीक है, फिर विल मीट ऑन मंडे. तो विल कीप कंटिन्यू फर्दर. ठीक है, पहले 2-3 हफ्ते तो इंट्रोडक्शन के होते हैं, समथिंग लाइक स्लोली स्लोली वी मूव. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और इफ अभी तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं आई, बट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन सेंड मी द ईमेल. ओके, और ईमेल में मैं डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूँ, और सबको ईमेल्स भी जाती हैं. ठीक है, तो जो बुक्स मैं फॉलो करूँगा, मे बी आई विल ट्राई टू अपलोड, बट आई एम नॉट श्योर येट. ठीक है, तो sorry for any kind of inconvenience because of this teams or this kind of stuff, but people need to understand this thing. Sometime वो Zoom पे ज़रा easy हो जाता है ये चीज़ें, लेकिन क्योंकि Zoom पे पूरा लेक्चर नहीं किया जा सकता, so that is why team is सर जूम पे आप कर सकते हैं लेक्चर। लम्स वालों ने ऑफिशियली पूरा मतलब खुद पैकेज खरीदा हुआ है, आईएसटी वालों से वो मिल जाएगा। no, I already asked. They didn't, I mean they don't want to support anymore. अब उन्होंने खत्म कर दिया. वो था, वो कोविड के दिनों में उन्होंने लिया था, अब नहीं है. Okay then, I'm signing off now. Excuse me. So see you on Monday. ठीक है, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.